that's Mauritius, or is being paid for by way of a predetermined rent. How has this happened? Mauritius always had sovereignty over a group of islands called Chagos Islands, Chagos. Chagos Islands in the Indian Ocean, deep in the Indian Ocean. I will tell you how deep and how far from every conceivable place that you can think of, but give me a moment before that. The history first. It was part of Mauritius. Mauritius was a British colony. Mauritius was a British colony in the process of decolonization after the Second World War. This process of decolonization reached its high point in 1959 when Harold Macmillan made his famous Winds of Change speech, where he said that Britain should give up all its colonies. Then work started on Mauritius, which was a colony. There was a conference at Lancaster in 1965, when it was decided finally that Mauritius should get freedom. However, as the British gave Mauritius freedom, they did one thing, and that tells you how big powers behave. How big powers behave today, because they look very far ahead. They look 50 years ahead, 100 years ahead, 200 years ahead. They look way beyond a human being's life, because nations have lives much longer than those of human beings or the leaders who lead them at any point of time. So 1965, before giving Mauritius freedom, what did the British do? They excised the 60 small islands where almost nobody was a native. These islands were called Chagos Islands. Of these islands, 60 islands, some of these are just atolls, and they are part of the larger Lakshadweep Chagosian ridge, underwater ridge, kind of underwater mountain, where some of these atolls have come up and these islands have come up. The British excised these, cut these away from Mauritius. So as they were going to give freedom to Mauritius, they were going to keep these islands. They were not going to give these islands. So even in 1965, the British and their allies, mostly the Americans, had come to the conclusion that Cold War was already on, that everybody will fight for possession of the seas and also bases to control large geographies. This place was located in a very critical place, so they were not going to let Mauritius have it, or they were not going to let anybody else have it. So the British cut away the Chagos Islands, the 60 Chagos Islands from Mauritius, and also signed a 50-year agreement with the Americans, in 1966, to let them have control or let them have use of these territories for security reasons, for defense purposes. The British were paid something for that. Itna free mein nahi tha. What was that amount? They were paid the $14 million equivalent. That was a discount given to them in the co-development of nuclear missiles to be fired from Polaris submarines, co-development with America. So they got a $14 million discount. For that, they sold away for 50 years, or rented away for 50 years, rights to use these islands for defense purposes to the Americans. That 50-year period would have ended in 2016, when it was extended by another 20 years to 2036. So what has happened now? After that, in Mauritius, there were lots of protests. Mauritius went to the UN. UN General Assembly passed a resolution with a large majority. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में पहला प्रश्न माननीय मोहले जी का है। रामविचार जी संभल के जवाब दीजिए, पहले बाल में गूगली करेंगे वो। चलिए मोहले जी। आदरणीय मोहले जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं
और मैं समझता हूं कि पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहे, पूरा सदन आपको सम्मान देता है मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर